Okay, over to you, Dorian. We're live. All right, guys, welcome to the call. My name is Dorian Saunders. We have hosted by General Barefoot, Kevin Barefoot, and Amjad. Amjad is helping to host it, and I wanted to thank you, Amjad, for translating this in Hindu. Correct? Hindu? Yeah, so Hindu language. And we're doing this for the Indian community. And we'll try to do this on a consistent basis. Your community is important to Kevin Barefoot. It's important to me, and it is important to Daoversal. Okay, and I'll give Amjad the time to translate that into Hindi. Okay, Amjad. So, Dorian, don't forget, give us a bit of time so that Amjad can translate, yeah? Okay, Yes, over sir. to you, Amjad. हेलो दोस्तों। ये मीटिंग हम कर रहे हैं। मिस्टर केविन और डोरियन जो ट्राई कर रहे हैं कि डावरसल जो भी नया प्रोजेक्ट डावरसल 2 आया है वो सक्सेसफुल हो आगे और हमारी इंडियन कम्युनिटी को हेल्प हो। दैट्स इट। डोरियन। Yes, sir. And what I want to do is say an apology on behalf of myself, General Kev, and Daoversal for always doing the calls with the Italian translator. ये अभी रिसेंटली जितने मीटिंग हुए हैं उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं कि जो जितना भी मीटिंग हुआ है सभी इटालियन लैंग्वेज में हुआ है और हिंदी में नहीं कर पा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम है। तो अभी देखते हैं क्या हम लोग को फायदा होगा इससे। And it's something that we didn't do on purpose. We just get caught up in our workflow and the standard strategy of things. And going forward, we're going to be consistent with your community and your nation to try to do things in Hindu in your language. ये हम जानबूझ के नहीं कर रहे थे क्योंकि ये अभी ये सब चेंजेस आया है जो बहुत सारे पॉलिसी प्रोसीजर में, तो इसकी वजह से हमें ये सब करने में टाइम लग रहा था और हिंदी में हम नहीं कर पा रहे थे मीटिंग, तो अब हम हिंदी में कर रहे हैं। What I must to say, I must start with, guys, I'm very bullish and I feel really good about the direction of Daoversal. All of us believe in the lands, the planets, and the direction that Daoversal's going. We believe in the Web3 movement, which is a $15.3 trillion movement. And Daoversal's ecosystem with the planets, the lands, and the way they structured is directly in place of that movement. And it's an opportunity for us, which is the reason why I'm here. मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि अभी जो मार्केट चल रहा है जो लगभग 15.3 मिलियन की ऊंचाई के साथ बढ़ रहा है आगे, और उसके साथ साथ डावरसल भी आगे जा रहा है और एकदम सही समय पे हमने स्टार्ट लिया है। इस बात की खुशी है मुझे और आगे मैं इस कंपनी के लिए करना चाहता हूँ। With that said, we've had some problems. All of us come from Hyper. We come from Nation. We come from We Are Satoshi and now Daoversal. I must say Daoversal 1.0 failed. तो हम सब जानते हैं जैसे कि हम हाइपर फंड से हाइपर नेशन और फिर उसके बाद सतोशी या फिर डावरसल 1 ये सब फेलियर हुआ है। कुछ टेक्निकल रीजन थे जो भी है, अब उसके आगे हम देखने काम करने के लिए साथ में आए हैं। Yes, and it failed, but it's not over. And the reason why I'm excited is unlike Nation, Daoversal, Jonah, the CEO, you don't have to like him. You can hate him. You can like him. He's still here fighting to fix the reasons why it failed. I'm here not to gaslight you, but to tell you why it failed. I took a look at the engine at the back office. I took a look at their financial ledgers, and I saw that the it was
just based on an overzealous platform built around the TFA that was just had too much pressure on it. वो के जो ग्रुप के सीईओ है वो, आप उनको पसंद करे ना करे, पसंद करे, वो ट्राई कर रहे हैं कि अब कम्युनिटी को आगे लेके जाएं, और जो टीएफए में परेशानियां आ रही है उनसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ये सब अपडेट लेके आए हैं। For example, they had great intentions with the TFA, but the $500,000 packages were just way too much. Um, just to be honest with you guys, they took in almost 112 million in intake, and more than that went out the door. A big pressure on the financial issues that Daoversal faced had to deal with those big packages on the TFA. And members such as myself, I wasn't able to withdraw. I didn't withdraw my TFA, but I had $500,000 packages, and it wasn't fair that Daoversal had to pay the debt from another company. It wasn't fair that Daoversal had to cover the debt from another company. तो ये जो फाइनेंशियल लोड आया है अपने डावरसल पे, उसके लिए सब जो पैकेजेस हैं उसकी वजह से कंपनी के ऊपर बहुत सारा फाइनेंशियल बोझ आ गया है, जिससे ओवरकम करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और ये 102 बिलियन का ये लोग ने फाइनेंस लेके आए हैं, जिससे ओवरकम कर सके। जो आया था पहले पुराने कंपनी के जो भी प्लान थे उसकी वजह से लोड आया है, इससे वो बाहर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। This debt from Hyper is a big anchor and a drag pull on the Daoversal going forward. And so they had to reshift things in negotiations. Kev Barefoot was part of that negotiation. Sergeant Main, who's on this call, was a part of that negotiation. I was part of that negotiation. So members that represent you were part of the negotiations to bring Daoversal back. We had to concede some things. We also had some wins, but these negotiations were hard. Some of them were rough. There was some fighting involved, and ultimately we were able to come to a conclusion of how we're going to bring Daoversal back with a version of the TFA. A version of the TFA. It had to change so the company can survive. तो अभी जो टीएफए का जो अपडेट आ रहा है वो वर्जन है, वो जो पुराने हाइपरनेशन से हाई डाइवर्सल में आने की का जो प्रोसेस था उसके बीच में बहुत सारे इनके बीच में डिस्कशन हुआ। इंडियन कम्युनिटी के लीडर्स भी थे, जनरल केव थे और डोरियन थे, ये सब लोग ने आपस में मिलकर बात किया। बहुत सारी इनके बीच में मतलब मतभेद भी हुए, लड़ाई भी हुआ, बट ये टीएफए कम्युनिटी को जो हमने पैकेज लिया हुआ था टीएफए का, तो उसको कैसे अभी अब लोगों के पैसे निकल के आए, ये सबको फाइनली ये बातचीत करके अब इसको सिचुएशन पे लेके आए हैं। Yeah, so the good news is the TFA is back. It is different, and what we did in some of the changes, we've got rid of the $500,000 pack. So the members that had big money couldn't drain the pool dry, so that most of the members, if not all of the smaller ones, can start to withdraw from their TFA immediately. जो 500,000 का फंड लेके आए हैं टीएफए के लिए, तो एटलीस्ट कम से कम जो कम पैकेजेस वाले हैं वो, जिनके पैसे लाइक फॉर एग्जांपल 2,000 5,000 के पैकेजेस वाले हैं, एटलीस्ट वो विड्रॉ कर सके टीएफए के लिए। ये कम से कम इस खुशखबरी को लेके आए हैं डावरसल 2.0 पे। Now, I'll allow Kevin Barefoot to get into the details of that. That's not my strength. So I'll stop there for that. The other part of it is all of you coming into this will have to pick an upline to bind your account to. It is critical. You've got to the beginning of January to do that. All of us, I had to do it. I had to bind my account to an upline.
of my choice, and I chose an upline that was active, that was connected, and you guys will have to do the same thing. Unfortunately, you're all going to have to do that. तो ये सब करने के लिए मिस्टर केविन जनरल केव हैं, वो टेक्निकली आपको सब एक्सप्लेन करेंगे अभी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि भाई स्टार्टिंग ऑफ जनवरी ये सब अपने कोई भी अपने पसंद के अपलाइन जो एक्टिव हो, जो आपसे कम्युनिकेट कर सके, ऐसा अपलाइन चुन के आप इस चीज़ को स्टार्ट करें ताकि विड्रॉल पॉसिबल हो सके। Now, that is very extremely important. It is our base. If you don't have your upline, your account bound to your upline or the upline of your choosing, then it's going to affect us going forward. The investors or venture capitalist money is looking at who does that. Basically, they're seeing that as the true community. The members that do not do that, let's just say you're not here. And it's okay that you're not here. It's okay. We understand that a lot of people are going to quit. It's like brushing off the fat of a pig, to get to the meat. We're brushing off the fat. There's a lot of people that have quit Daoversal. We're okay with that. We're trying to go forward with the meat, the people that have made the decision to stay and go. But we need you to immediately pick an upline, number one, before we do anything and buying your account. And General Kev and Sergeant Me will go through the details of that. And again, my goal is to pass that on to the guys smarter than me to do that, but they will show you guys how to do that. ओके, तो अपलाइन होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है अपलाइन होना, उससे आप बाइंड रहिए। और टेक्निकली हमको जनरल के एंड जीपी में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे इसके बारे में अब। Yes. And the good news is they're going to come up with tutorials on that. And what we'll try to do, Amjad, I hope I'm saying Amjad, is use you with these tutorials to make sure the language is right for your communities. तो ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसे कैसे क्या क्या करने हैं, स्टेप बाय स्टेप, ये सब पूरा जानकारी देंगे। सो हम लोग समझ पाए अपने लैंग्वेज में। और कुछ भी आप प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझसे हमदर्द से बात कर सकते हैं, मैं भी समझता हूँ और आप लोग को भी एक्सप्लेन करूंगा। But please understand, time is of the essence. Soon I will be flying to Dubai. I will be in front of venture capitalists with money. This money is very important to all of our survival, Daoversal survival, and us being able to make something out of our investment. The investors can either say no to me or yes to me. So we have to dress up. We have to put on our best clothes, clean our room. And what does that mean? Getting as many members to buy into an upline as possible, because that pretty much shows what they're invested in. The other part is how many members do what Limrock have done. Staked high, Sassy, staked, and also moved assets into Dow bets. All of that is cleaning up our room, looking good in front of investors, making sure they will give us the money and control to go forward. तो बहुत जल्दी मैं दुबई आने वाला हूँ। तो दुबई जब आऊँगा तो मैं चाहता हूँ कि सब एक नतीजे पर पहुँचे और जल्द से जल्द लोग इस पे काम करें और सब सही तरीके से हो, यही मैं चाहता हूँ। It's critical. The best way I can put it is the wins that we have in negotiations is now we're going to have control. They will give us a certain amount of investment, a pool of money that our members will control and what we do with it. We also, the reserves are the intake of funds that Daoversal will get. Our members would be on a multi-signature of these funds. Do I know who the people are? Yes. I can't say their names for fear of what to protect them a little bit, but I do know
we will have some sort of protection on the direction and how funds are spent going forward. तो जब मैं यहाँ पे आऊँ तो मतलब मुझे पता है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसको दे रहा हूँ, ताकि हम लोग जुड़े रहें। और जो लोग निवेश निवेश किए हैं इस कंपनी में, जो हमको हेल्प कर रहे हैं, वो हम मुझे पता रहना चाहिए। और मुझे पता है, और कुछ लोग का नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूँ उनके लिए, प्राइवेसी के लिए, और बताऊंगा भी उनके लिए भी और आपके लिए भी, जिनको पैसे दे रहे हैं वो इन्वेस्टर है। The way to look at it, right now we got, let's say, 3 separate products. The first product, you can say it's our non-fungible tokens or our land or our planets. That's a product. It's a product with a digital value, okay? The question is how high we're going to get that digital value worth. The other product is MySpace, which we're launching. General Kev Barefoot has been working very hard behind the scenes of MySpace, with some exciting things to happen with that product. But the MySpace product also needs investments. It needs money to prosper. It needs money to grow. And we've got very talented members in our community that can help that grow. And I need the venture capitalists to provide the pool that you control, Amjad, that I control, Sergeant Ming controls, your whole Indian community controls. So we decide how much of that goes to that product. We have other projects. The Dow Bets is another project. I can tell you Dow Bets cost us 800,000 USDT. It is a third-party project, and I know that project produced almost 12 million in liquidity in 12 months. It is Daoversal, but it's outside of Daoversal. So it's think of it as businesses in our ecosystem that stake to our planets and land and bring value to that by also providing a use for the Dow T token to be in front of that and behind it and in the middle of it. And when that happens, it causes the Dow T token to go up in value. It causes our non-fungible tokens to go up in value. And then your pocketbook, your wallet, your own personal money can go up in value. That's a win while we're winning, while we're win. A win, win, win. तो हमें जो डावर्सन में हमारे प्लेनेट सिस्टम वाला इन्वेस्टमेंट था, वो मैं चाहता हूँ कि एक ऊंचाई तक जाए, जो उसका वैल्यू ऊपर जाए उसका इन्वेस्टमेंट की। तो उसके लिए, उसका बूस्टअप होने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद एक और प्रोडक्ट लेके आ रहा है माई स्पेस कंपनी। तो कंपनी चाहती है कि वो भी ऊपर जाए, जिससे कि सबको मतलब इससे फायदा हो। तो ये सब प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और डाउबेट के नाम से एक प्रोडक्ट आ रहा है, जो कि 800,000 ये है। और इसमें एनएफटी रिलेटेड ये सब और डिजिटल क्रिप्टो रिलेटेड सब इन्वेस्टमेंट है। और ये चाहते हैं कि ये सब एक वैल्यू उसका ऊपर जाए, सो दैट सबको फायदा हो, कंपनी को फायदा हो, हम सबको फायदा हो, सबका पैसा विड्रॉ हो। So it's very important. We can save ourselves by showing the venture capitalists, not Jonah, how strong we are by taking advantage of Dow Bets, by binding. We need as many people as possible. Some people are going to say, I don't have any more money to put in. It's okay. At least a bound to your upline. Some people like Lim is going to already have the Dow T to stake. Let's not wait. Let's stake it now. You guys got people like General Kev and Sergeant Main that are breaking down the details of it. Trust me when I tell you, General Kev and Sergeant Main are in the back office. They're connected to Jonah. They're connected to me. So they have the information. If somebody else is giving you information outside of them, I don't know how to take that. You understand? Because these guys they're fighting now and things are liquid. It's changing so fast. So you want to protect your community from the false information. Because I'm telling you, General Kev and Sergeant Ming are on it. One day it's this way, and the next day we could be in negotiations, and it can be that way. So what I don't want the community to do is be following 50 different people. Follow General Kev, follow Sergeant Ming. They're connected to the flow.
तो डोरियन चाहते हैं कि जितने जल्दी हो सके लोग अपने अपलाइन से बाइंड करें, सो दैट एक कम्युनिटी नजर आए सामने। तो क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे तो वो तो निकल ही जाएंगे, बाहर बाहर हो जाएंगे। वो अपलाइन कनेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, कई लोग चाहेंगे कि वो अभी और इन्वेस्ट ना करें, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट आप अपलाइन के साथ बाइंड करिए। और कई लोग का ऑलरेडी लैंड परचेस है और है इन्वेस्टमेंट पहले से इस प्रोजेक्ट में। तो वही बैक ऑफिस में जनरल के व एमडीटी काम कर रहे हैं, जो इन जोधा और मिस्टर डोरियन के साथ जुड़े हुए हैं हमेशा। तो उनको बैक ऑफिस और बैक स्ट्रक्चर का पूरा इंफॉर्मेशन है। वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं जितना हो सके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके, ताकि एक कम्युनिटी बने और फिर आगे बात बढ़े। यही चाहते हैं। And our connection to this community right now is going to be Amjad. Why is that important? Because Amjad can speak English. Okay. Amjad has stepped up. So, what does that mean? He's going to be in the flow of the information. We're going to be communicating with Amjad, and Amjad's going to be giving the information to you. So, what I'm doing is I'm knighting Amjad. Okay. Guys, follow Amjad, please, because we're going to disseminate it to MJED. We cannot get it to 50,000 people 50 different ways. We are going to make MJED our point. Fair enough. तो अभी आप क्योंकि अभी आप इतने सारे लोग इंडियन कम्युनिटी से आएंगे, सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो डोरियन सर बोल रहे हैं कि आप अमजद से बात करिए, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन है पूछिए, आपको क्या जानना है। ये मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप बाद में मतलब अमजद आपको सब एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि कितने लोग अलग अलग से क्वेश्चन पूछेंगे, उनको अब सबका तो जवाब दे नहीं सकते वो। तो इंडियन कम्युनिटी वो चाहते हैं कि मैं मतलब मैं आपके बिहाफ में और उनके बिहाफ में मैं आपसे बात करूं। And that's for your protection. It is for your protection, guys. We have a lot of false, what's the best way to say it, Kev? We got some false pretenders out there that want nothing to do but hurt us. और ये सब हम कर रहे हैं कि मतलब आपकी जो फंड डिपॉजिट है वो प्रोटेक्टेड रहे, और चाहे कि आपको फायदा हो, इससे प्रोजेक्ट से फायदा हो। Okay. So, what I'm going to do, I'm more of a broad thinker. I told you guys a lot of information. I'm going to have General Kev focus on how you bind, and he's going to show you. He's going to share a screen, follow him, ask him a billion questions if he can, but he'll try to keep it simple. We're going to record this MJED right now, and well, it's going to be in Hindu too. So this is going to be recorded. So we're going to get into the details of how things done. I'm going to mute myself and listen and follow. तो मैं अभी जनरल के पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे बाई करना है, कैसे कौन से स्टेप अपने को फॉलो करना है, और मैं साथ में आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता रहूँगा। और जनरल के पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस प्लान के बारे में। Okay, guys, fantastic. Thank you very much, Dorian, for explaining in detail the problems that we've had to face. Um, and there's not a great deal, that I can add to what Dorian said, other than it has been extremely frustrating over the last few months getting ourselves to the position we are at today. And I think Dorian will agree with me when I say it will probably still continue to be frustrating for the next few months. अभी जो पिछले कई महीनों से लाइक जब से ये बंद हुआ था रिवॉर्ड्स आना, तो सब मतलब परेशान ही है। और इसके अभी तक कंटिन्यू परेशान सब लोग सोच रहे हैं कि क्या है कैसे है। तो अभी तक तो चल ही रहा था, अब देखते हैं क्या काम करता है, और अगले कुछ महीने तक ये परेशानी रह सकती है। तो इसके लिए मतलब चुप रहने से तो फायदा नहीं है, कुछ ना कुछ तो ये कर सकते हैं, देखते Okay. But what I'd like to add to that is for those members that want to
proceed with Daoversal 2, the best advice I can give is to keep connected with your upline. And like Dorian said, Amjad is the best connection that we have to your regions, your countries at the moment, mainly because of time zone differences as well, because we've got nearly a 9 hour difference between India and America, where Dorian is. तो इसमें आगे जाने के लिए डावरसल 2 जो आया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपना अपलाइन के साथ जुड़े आप और आगे का अपडेट लेते रहें। और हम सबका नाम इसलिए लिए रहे हैं क्योंकि अब ये इंडियन कम्युनिटी से इनके साथ जनरल केव और डोरियन का टाइम गैप बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए कोई ना कोई एक मीडिएटर एक चाहिए प्रतिनिधि टाइप का, तो इसलिए अमजद का नाम ले रहे हैं। Okay. So we understand how frustrating it is for everybody over there too. So I want to pass on a little bit of advice. Even though we are going to try to help you with these tutorials as easy as possible, please don't forget that you may have to watch them over again in order to understand the process. And like Dorian explained, these processes can change over time too. So try and keep plugged in for those changes should they happen. तो ये मैं जितना हो सके अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि आपको बार बार और देखना पड़े कि क्या क्या फॉलो करना है प्रोसीजर और स्टेप क्या फॉलो करना है। ये तो अभी देख लेंगे, लेकिन आप और बाद में देखते रहिए और हमेशा आपको जुड़े रहना है। बाद में जो अपडेट आएगा हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए, तो इसके लिए आपको जुड़े रहना है हमेशा के लिए। Okay, so moving on to what members have to do in this process, I'm hoping to do each section slowly, bit by bit, so members understand each step of the process. But again, please understand that these things have to take time slowly so that we can roll out Daoversal 2 without too many hiccups. Okay. तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझाता हूँ पूरा स्टेप। ये ऐसा जनरल के बोल रहे हैं और वो टाइम मतलब एक टाइम के बाद हो सकता है कुछ अपडेट आए, तो वो बताते जाएंगे कैसे करना है। Okay, so now, Amjad, could you just confirm that you can see my Dalversal back office? Yeah, यस आई कैन सी जनरल। excellent, excellent. Now, members, as Dorian explained, members have got to bind to an upline, okay, like a team leader, so to speak, okay, like Amjad might have me as his upline, okay. This is crucial. This is the first step that members need to be looking at if they want to proceed with Dalversal 2. तो सबसे पहले तो आपको अकाउंट में लॉगिन करके आपको अपलाइन के साथ बाइंड करना है। जैसे कि मैं अमजद में बाइंड किया है जनरल केयर को अपने अपलाइन जैसा, तो आप अपने अपलाइन को बाइंड करिए सबसे पहले, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। So to move along with this process, you need to log into your Dalversal, go to your username and click on invite, and you will see this page here. Although you will see an additional green button here that says bind now. तो पहला स्टेप ये यूजर नेम जो राइट टॉप में दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इनवाइट ऑप्शन आएगा। इनवाइट ऑप्शन आप देख क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ग्रीन कलर के टैब नजर आएंगे, जिसमें से एक रहेगा बाइंड अपलाइन का, तो वो आपको नजर आएगा। तो पहले आपको बाइंड करना पड़ेगा अपने अपलाइन के साथ। The bind now button is the button that you will need to click to enter the invitation code from your chosen upline, i.e. your team leader. So you need to get that invite code from your team leader, from your upline.
बाइंड नाउ जब टैब आप क्लिक करोगे ग्रीन कलर वाला, तो उसमें उसके लिए आपको आपको अपलाइन जो आप चूज करोगे, आपका अपलाइन, उसका आपको इनविटेशन कोड आपके पास होना चाहिए, जो आपको जरूरी रहेगा बाइंड करने के लिए। Once you have your upline's invite code, you can go ahead and click Bind Now, enter the code, and click OK. After you've done that and it's been successful, you can double check that it's been successful by going to your username and clicking on Account Settings and checking the username of your upline, which should show here. कोड आपको कोड अपलाइन कोड मिलने के बाद आप कल अपलाइन कोड एंटर करेंगे और ओके ओके दबाएंगे। उसके बाद आप यूजर नेम में क्लिक करने के बाद अकाउंट सेटिंग आएगा। अकाउंट सेटिंग में नीचे आप ऑप्शन देखेंगे अपलाइन का नाम, तो उसमें जो अपलाइन का यूजर नेम रहेगा वो वहाँ पे आपको शो करेगा। इससे आपको आप डबल चेक कर सकते हैं। Once you can confirm your upline's username is in the right area within my upline, the process of your upline is complete. जब आप यहाँ देख लेंगे कि आपके अपलाइन का नाम यूजर नेम दिखा रहा है बाइंड करने के बाद, तो आपका जो बाइंडिंग प्रोसेस है अपलाइन का वो आपका हो गया। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। Okay, so moving on to the TFA process, because many members are looking at this as an important step forward with Daoversal 2. ओके, आगे बढ़ने के बाद उसके बाद अभी हम एसेट क्लिक करेंगे, तो उसमें टीएफएफ पोर्शन पे आके चेक करेंगे, जो कि डाउनवर्सल 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हमको एसेट में आके क्लिक करना है और टीएफए में जाना है। I am only going to touch on the very basics of the TFA because there's still certain aspects that need adjustments. But in general, to begin with, Daoversal 2 is offering members the AP2K and the AP5K packages. अभी स्टार्टिंग के लिए डाउनवर्सल दो पैकेज दिया हुआ है, AP2 के और AP5 के वाला दो ऑप्शन है। यही दो ऑप्शन के बारे में फिलहाल अभी चर्चा करेंगे। In order to activate these packages, once you've purchased them with your DC tokens, your DC tokens are of value 2,000 and 5,000 respectively. To activate them, the member must reach certain requirements. ये दोनों पैकेज कोई भी, दोनों में से कोई भी पैकेज एक्टिवेट करने के लिए 200 डीपी का जो आपका पैकेज है और 5000 डीपी का पैकेज है, ये आपको एक्टिवेट करने के लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा। Okay. Those requirements, one of which is to stake for the AP2K, is to stake up here a minimum of 500 Dao T. That's one of the requirements. इस टू AP2 पे से एक्टिवेट करने के लिए आपको 500 टी स्टेकिंग करना पड़ेगा, ये पहली शर्त है। The second requirement is to deposit 100 Dao T tokens into Dao bets, of which I'll go into detail in a moment. दूसरा शर्त ये है कि आपको 100 का डिपॉजिट करना पड़ेगा मिनिमम। जो दूसरी शर्त है और वो कैसे करना है ये भी बताएंगे। We are currently advising members to just take things very slowly at the moment
because the TFA packs, the new TFA packs in Daoversal 2 are not fully functional at this time, but hopefully it won't be too long, at which point we will further advise, okay? तो अभी जो दो पैकेजेस हैं वो आराम से करने के लिए, स्टेजिंग आराम से ही करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों पैकेजेस हैं वो अभी मतलब फुल स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है अपडेट करने के लिए, जिसके लिए वो बताएंगे कब करना है। Okay, members will also want to know about their old original TFA packs, how they will be activated, what will happen with them, etc. At this time, we are still waiting for the tech team to report back to us on the complete process. We will update as we know everything comes to us, okay? तो ये चीज़ है कि जो पहले हम ऑलरेडी ले चुके हैं पीएफ पैकेज जो हमारा चालू है शुरू से, उसका अभी क्या करना है ये हम टेक्निकल टीम से बात कर रहे हैं, और वो हमको अभी तक कुछ इसके बारे में आया नहीं है, तो जब भी इसका अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। Okay, I'm now opening a window tab to open my Bets account. Can you confirm you can see the Bets picture now, Amjad? या आई कैन सी द पेज। Excellent. Okay, I'm in the right place then. Okay, guys, again, there is no need to rush forward to do this, but I'll just touch on the surface of information so that you have an idea. But all this will come out in the future because there are still minor issues with the Dowbets platform. Okay. तो ये मैं अभी आपको डाउबेट का पेज में लेके जा रहा हूँ मुझे, और ये अभी ऐसा मतलब इस पे आपको करना ही है लॉगिन, और ये सब ऐसे जरूरी नहीं है, ये आपको बताएंगे अभी भी, मतलब बनने के दौर पे चल रहा है, तो जब भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा इसके बारे में। Now, Dowbets is an external platform, but it will be connected to our back office Dowversal accounts. So every member will need to go through this process of signing up their own account. Okay. तो ये अभी डाउ वर्सल का पार्ट नहीं है, जब ये कंप्लीट ये हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप अपना इस पे साइन अप कर सकते हैं, तब ये बाद में जाके जोड़ेगा, तो इसमें क्या करना है कैसे करना है ये आपको बताया जाएगा बाद में। At this moment in time, I would suggest just to wait until further advice. But again, I will just go through the very basics so that you've got an idea for when that time comes. This interface here is how you register. You need to put in your username, your chosen password. The verification code is that code there that you need to put in there. Your invite code, what we're suggesting is that you contact your upline for their Bets upline code, their invitation code. Okay, similar to how we've done it in Daoversal 2, I think it might be a good idea to do exactly the same thing in Bets. So let your upline sign up first and then get them to give you their invite code. Okay. तो ये साइन अप करने के लिए आप अपना यूजर नेम लिखिए, आपका ये पासवर्ड लिखिए, फिर इसके बाद जो ये वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो एक वाइट बार में दिखा रहा है, और आप एक इसके बाद आपको इनविटेशन चाहिए रहेगा, जैसे आपने डावरसन में आपको इनविटेशन कोड मिला है आपके अपलाइन से, तो इसके लिए भी एक इनविटेशन कोड मिलेगा आपके अपलाइन से, जो आप यहाँ पे डाल के साइन अप कर सकते हैं। Again, I will stress that there are issues with this platform at the moment, minor, but we still have to wait for further advice. But once we gain access into our accounts, we can then bind our email addresses, and it's
vital that we use exactly the same email address as we did with our Daoversal 2 account. अच्छा, इसमें अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि कंप्लीट भी हुआ है ये। अब इसमें कुछ ना कुछ है, इशू चल रहे हैं। तो फिर बाद में जब अपडेट होने के बाद आप अपने ईमेल को बाइंड कर सकते हैं जो आप अपने डावर्सन पे यूज किए हैं। वो सेम ईमेल आप बाद में इसके साथ आप इस डाउनलोड के पेज पे आप अपना बाइंड कर सकते हैं। The very last thing that I will tell you at this time about Dow Bets is that once you've created your account, you will then be required to launch a new Google Authenticator. So you will have to go through that process and make sure you save all relevant details for further, if you need it in the future. Okay. फिर बाद में बता देना चाहूँगा, जब आप साइन अप कर लेंगे उसके लिए आपको गूगल ऑथेंटिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप इसके साथ बाइंड कर सकेंगे, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। Okay, the last thing that I want to mention is MySpace. Dorian's already touched on it and explained that I've done a heck of a lot of work. Me and my wife have been extremely busy preparing for MySpace. I don't think I can add a great deal more to it than Dorian's already said, apart from Daoversal 2 may look to many members very similar to Daoversal 1 at this time. It won't once MySpace is open because members will see a completely new transition from the two, from Daoversal 1 to Daoversal 2. That's when members will realize that Daoversal 2 has much more to, let me just admit this member, much more to offer in the way of member engagement. Now, as Dorian explained before, the engagement of the community is extremely important for the VCs and the investors. What does that mean to us as a platform, as a community, as a metaverse that's going to move forward successfully? That means everything. Like Dorian explained, it's not all about money, it's about engagement. And it's very difficult to engage, especially in the Telegram groups when there's a lot of negativity floating around and so forth. Okay. So this is why I'm so bullish on getting MySpace open so that it gives everybody the opportunity to congregate and see what else is on offer. Can you unmute Amjad? Did you Okay, get sorry. that Yeah, statement? I got some technicality issue. Okay, so now it's okay. So ये जनरल केयर बोल रहे हैं कि ये माई स्पेस का अपडेट है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़े। सो क्योंकि ये सिर्फ मनी विड्रॉल के बारे में नहीं है, मनी के बारे में बात नहीं है। लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो, क्योंकि रिसेंटली इतना निगेटिविटी और ये सब बात हो रही, इतने महीने से जो चल रहा है, तो चाहते हैं कि लोग जुड़े, एक दूसरे को जाने और इस कम्युनिटी को मतलब आगे बढ़ाएं। लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, यही मिस्टर डोरियन और जनरल केव बोल रहे हैं कि एक इंस्टाग्राम अपना टेलीग्राम में जो कम्युनिटी है उसमें लोग ऐड हुए और जाने एक दूसरे को, तो कम्युनिटी थोड़ा बढ़ के आए आगे। Okay, thank you, Amjad. Okay, here's a typical example of what an upline member means to us, group leaders. I've just been reminded by a very valued member of the community that every TFA pack has to be met with those requirements individually. So for each TFA pack, you will need to meet those requirements. That is a great example of what I would class as a good upline member.
Just one moment, Amjad. You should be able to unmute, but you can't. Just bear with me. Okay, go ahead, sir. Let me make you co-host again. That's probably what it is. ओके, तो ये टीएफए पैकेजेस के बारे में जो है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टीएफए जिन जिन का इंडिविजुअल का पैकेज है आप सबका, वो आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप जब अपलाइन बनेंगे या मैं अपलाइन हूँ, तो इस इंफॉर्मेशन को हम जाने कि उसको सब टीएफए का क्या रिक्वायरमेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और यही अपलाइन बनने के लिए है। Okay, many thanks. I've just put you back as co-host, Amjad. I think you might have dropped out, which automatically drops that role. Okay, so hopefully you should be able to unmute as and when now. Okay, so that gives you a great idea of as much information as we've got at the moment regarding MySpace. Like I said, that will hopefully be open as soon as possible so that we can all start to look upon Daoversal 2 as a completely new platform and the importance of how the community at large can feel the value rather than just being a member, you will be a valued part of moving Dalversal forward. Okay. तो माई स्पेस जब लॉन्च हो जाएगा कंप्लीट, तो सब डावरसल माई स्पेस सब एक अच्छा परफेक्ट प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं कि ये आप सिर्फ सदस्य नहीं रहेंगे, एक मेंबर नहीं रहेंगे, आप एक मतलब वैल्यूड मेंबर रहेंगे कम्युनिटी में, और आपको सारी जानकारियां रहेगी। Okay, now before I hand it back to Dorian, I'd just like to thank Amjad for a wonderful job that he's done this evening. Sir, you have saved us a heck of a lot of work because the regions that you are covering over that side of the world is extremely difficult to communicate with, like I said before, because of the time zone difference. I would urge any member that hasn't got an upline and is a bit lost on direction of where to take Dalversal to contact Amjed because as far as I'm concerned, Amjed is going to be a key player in helping to pass the information on to those regions, okay? I have to concur. बाकी Um, Mjed, thank you very, very much. And I thank you for being kind and understanding as we, you know, kind of leaned towards the Italian side of things. This community is extremely important and vital to us, and we intend to grow it any way we can. And um, your support and understanding is critical to us. So thank you. थैंक यू सो मच सर। आई विल लुक फॉरवर्ड टू हेल्प एवरीबॉडी इन माय रीजन। whoever required my help I will help। और मेरे रीजन में जितने भी लोग हैं और जिसको जो भी हेल्प चाहिए रहेगा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है और जो मैं आगे बात कर सकता हूँ, लोगों को करके बताऊंगा। We we are in a fight. Nothing happens without a fight. Nothing is given for free. Nothing. Um, we all have to, if we want to change our lifestyle, the way we live, money, right? No one's going to hand it to us. So we got to understand. Okay, I think Dorian's video's locked up. Are you there, Amjad? Yeah, Is it locked up for you, sir? yeah, he's locked for me also। Okay, I'll continue until he comes back. Dorian, just let me know when you get back, sir. It looks like your ओके। internet's dropped out.
Okay, yeah, what Dorian was portraying is that this is a fight. Nothing is ever easy. I mean, if you look at the wider crypto ecosystem, we all know that it's an extreme battlefield out there, and Daoversal 2 is no different. In fact, it's quite, extraordinary the battles that we've already faced ourselves. यस, ये डोरियन सर और केव बोल रहे हैं कि अब जो भी सिस्टम है इसमें मनी का तो रिक्वायरमेंट रहता ही है हर जगह। तो ऑब्वियसली किसी भी स्टार्टअप रेस करने के लिए या बैकअप करने के लिए पैसे डालने की तो जरूरत पड़ेगी ही। ये अब आपके डिसीजन पे है। जो भी आप करना चाहें सोच समझ के करें। ये चाहते हैं कि कंपनी आगे बढ़े। Okay. We have witnessed a lot of anger in the communities, more so the communities that haven't got a good leader to turn to. Okay, now this is why we encourage members like Amjad that are willing to step forward. I will admit, Amjad, a few months ago we had the correct person that we had in mind for that role. But yet again, some people turn their backs and walk away. And unfortunately, this person did that. And that's why we were left in a dilemma, not knowing who could help your community. तो ये इंडियन कम्युनिटी को हेल्प करना चाह रहे थे बहुत लोग। ये सोच रहे थे कि कुछ लोग लीड करें, बट वो लोग अपना डिसीजन नहीं लिए और वो लोग अपना हाथ पीछे ले लिए। तो अभी अ, ये मेरे लिए इसलिए बोल रहे हैं कि हम जब आए और ये बात करने के लिए आगे बढ़े, बात पे एग्री किया। So we understand if you are mad, we are mad. We are mad. Things have happened that we didn't expect, and we're willing to step forward and try and fix those problems. It helps with a good community, and that good community, if they have good communication, we will go far together. तो पुराने जब भी प्रॉब्लम हुए डावरसल में तो पता ही है सबको प्रॉब्लम हुआ है। तो अब इसको फिक्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे बात करने के लिए सबको जुड़ के आगे सामने आना पड़ेगा। तो यही करना है आगे बढ़ने के लिए। Okay, Dorian, are you back in the room? I don't know what happened. I don't know You what you guys heard. My computer froze up. I don't know what's going on with it, but I don't know where I left off, Kev. I said a lot of things, and then I realized you guys weren't hearing anything. Did it? Yeah, you're locked up, say it says your bandwidth is low, so it's probably the internet that's locking you up. Okay. What I will say is, uh, guys, we still have a fight on our hands. We have the fight is we're trying to save the company, right? So the company can pay us money. Um, we what we do now, we're gaining control of the wheel. We're going to gain control of some reserves. We're going to gain control of the company with their money, and we're going to get to take the wheel of the car, so to speak. We could fail. We could drive the car off the cliff, or we could stay on the road and maybe win. Hopefully, we can win, but here's the caveat of it: win or lose, at least we have the control. Before, win or lose, we didn't have the control. So, on a big sheet of paper or on the wall, write down control. Because trust me, we are going to take control of this car. तो अभी कई लोग पसंद नहीं करेंगे बात को कि भाई फिर से ये डालने बोल रहे हैं पैसे, और इन लोग को पसंद नहीं आ रही है ये चीज। लेकिन अभी सब कुछ को चल रहा है, देख रहे हैं बहुत लोगों के बारे में, लोगों को कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। लेकिन अपने कंट्रोल में करने के लिए सब तो करना ही पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। So, guys,
thank you very much for being on the call, and we appreciate you. And God bless. थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Okay, guys, I really appreciate people for taking the time to come to this call. We do understand it's very late over in UAE and East Asia. And like I said, we will do our best to um, help you guys as we move forward. And with the assistance and interpretation from Amjad, which has done a wonderful job this evening, I'm sure that you'll understand that we can work together and move forward with you. थैंक यू सबको कॉल में आने के लिए, और इतने लेट में सब लोग को इंफॉर्मेशन दिए आप। और जो भी आपको, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंट, बेसिक अकाउंट सेटअप के लिए, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। हम जब से मैं टेलीग्राम में अवेलेबल हूँ, एनी टाइम आप मैसेज करिए, मैं जब भी अवेलेबल रहूँगा आप आपको रिप्लाई करूँगा। टाइमिंग का कुछ मतलब नहीं है। Okay, as long as members understand that we are extremely busy and it's going to take a process. And like I said, we understand that members can get angry and mad because, we're going through tough times at the moment. With your patience and understanding, everything will be fine. And hopefully, we'll all come out of this bit battered and bruised, but we'll come out of it the best way we can. Okay. So we'll call it the end of the meeting. And Amjad, I'll add you as a friend on my Telegram, and we will keep in close contact so that we can make sure that any new information come direct to you, sir, and you can distribute that to other team members. Okay. Okay, sir, Kevin. You can convey me a message whenever it's okay for me. Okay, perfect. Right. As far as I'm concerned, I think that's it. Are you, Dorian? Are you happy with that? I am excited. Thank you very much. Thank you very much, Kev. Excellent. No problem at all. And okay, to the communities that managed to make this call this evening, thank you so much. It's an absolute pleasure to be able to, stand up and help you guys. And I look forward to the next call. And like I say, we're more than willing to do this, guys, as long as we can fit you in. Like I say, there's a big time zone gap, so we'll work towards that, okay? Amjad, you've been an absolute angel, mate. Thank you very much for your help, and I look forward to contacting you soon, okay? Oh, thank you. You All too. right, guys, get some rest. I Thank know you. it's about 3 Thank a.m. you. over there. Good night. Bye. Night, night. All right, take care, guys, and we'll catch you soon. Let me end the recording if I can find the correct button.